Yesterday we completed up to the metallurgy. I was explained some important questions in the metallurgy and also one SAQ in the 7th A group element, that is what are interhalogen compounds, write about them. That question is also over and LAQs are also over. Once again I am repeating that we have completed up to the up to the P block elements. See that in the 11th question there are two important SAQs are there. Which are those questions? First one is the Bragg's equation. Second expected question, semiconductors. So इन दोनों में से क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है. सेकेंड 12th वन, ये 12th क्वेश्चन कहाँ से आएगा? दिस इज फ्रॉम द सॉल्यूशंस. सॉल्यूशन से कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चंस कंप्लीट करा था मैं, आप लोगों को मालूम है. फर्स्ट वन इज द मोलारिटी एंड प्रॉब्लम्स. मोलालिटी एंड प्रॉब्लम्स. मोल फ्रैक्शन एंड प्रॉब्लम्स. देन उसके बाद रॉल्स लॉ, इंक्लूडिंग विथ पॉजिटिव, negative deviations and problems. इसमें से 12th क्वेश्चन रहता है एग्जाम में. 11th क्वेश्चन में ब्रैग्स इक्वेशन है, सेमीकंडक्टर, दोनों में से एक पक्का आता. और 12th क्वेश्चन में मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, या नहीं तो फिर रॉल्स लॉ, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन और रॉल्स लॉ का प्रॉब्लम है. 13th क्वेश्चन में आपको व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? फैराडेज लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडेज लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ये क्वेश्चन है. नेक्स्ट ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी, ये भी आ सकता. सो ये 13th क्वेश्चन है. Now then in the 14th one में ये 14th क्वेश्चन आपको सरफेस केमिस्ट्री से आता. राइट द डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल केमिकल एडसॉर्प्शन, या नहीं तो कैटालाइसिस and its types, then नहीं तो emulsion types, colloidal solutions. Example in this lyophobic solutions. ये important ऐसे क्यों से? तो परसों आया सो जो क्वेश्चन है वो माइजिल, फॉर्मेशन ऑफ माइजिल एंड क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, क्लेंसिंग एक्शन ऑफ सोप, ये क्वेश्चन है भैया 14th में. इसी में से रहते, ये पढ़ लिए तो 14th क्वेश्चन आप कर सकते. तो ये 14th में मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलो सर, बोले तो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है: physical chemical adsorption, catalysis and emulsion types. In the question number 15th क्वेश्चन में आपको ये कहां से आएगा? मेटलर्जी से. कैल्सिनेशन, रोस्टिंग के डिफरेंसेस है, ना तो फिर फ्लोटेशन मेथड, या नहीं तो कौन से भी मिला के पूछता. व्हाट इज पोलिंग,
व्हाट इज जोन रिफाइनिंग, ऐसा पूछ लेता हूँ मैं। तो फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक परसों पूछा था ये, एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक, ये ज्यादा नहीं आता, तो इसी में से ये फर्स्ट एंड सेकंड में से ऐसे क्यों रहता। क्वेश्चन नंबर 15 है ये। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में तो फिर आपका जो है XeF2, XeF4, XeF6 या नहीं तो XeO3, XeOF4, XeO3, XeO4, ये ज्यादा नहीं पूछ रहा। XeF2 है, इन दोनों में से क्वेश्चन पक्का है। 16th क्वेश्चन में से XeF2, XeF4 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। XeF6 दिस इज द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, या नहीं तो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स क्या है बोल के पूछता। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 17 में क्वेश्चन नंबर 17 इधर देखिए, व्हाट इन दिस, यहाँ पे वेर्नर्स थ्योरी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, या क्वेश्चंस आगे पीछे भी हो सकते हैं। वेर्नर्स थ्योरी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, थ्योरी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। और नेक्स्ट IUPAC names, IUPAC names of the complexes, of the complexes। क्वेश्चन नंबर 16 में और एक भी नोट कर लो बेटा, बायोमॉलिक्यूल से आ सकता है ये। अगर वो VSAQ में नहीं पूछा बायोमॉलिक्यूल, तो SAQ में पूछता। तो SAQ में कौन से है क्वेश्चंस वो, व्हाट आर विटामिन्स, व्हाट आर हार्मोन्स, विटामिन्स हार्मोन्स, नहीं तो अमाइनो एसिड्स में, अमाइनो एसिड्स में एसेंशियल, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, पेप्टाइड लिंकेज, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। देखिए बायोमॉलिक्यूल्स के क्वेश्चंस है ये। बायोमॉलिक्यूल्स में विटामिन एक है, हार्मोन्स एक है। These are the important questions in the biomolecules. What are vitamins? Write about the fat soluble vitamins. This is the one question. Or what are hormones? Write the examples for the steroid, non-steroid hormones. This is the another important question in the biomolecules. Then another important question in the biomolecule is what are amino acids? What is Vita-ion? What are essential and non-essential amino acids? Write about the denaturation and peptide linkage. These are the some important question. So ये क्वेश्चन नंबर 16 में आ सकते हैं, या नहीं तो ये नोबल गैसेस आते हैं। बहरहाल ये जो क्वेश्चंस मैं लिख रहा हूँ इंशाल्लाह कैसा भी आपको एग्जामिनेशन पेपर में दिखते आपको। और ये दो क्वेश्चन से क्वेश्चन कैसा भी रहता, वेर्नर्स थ्योरी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस या IUPAC नेम्स, ये और एक जो है लैंथानॉइड कंट्रैक्शन बोलते हैं, लैंथानॉइड कंट्रैक्शन, लैंथानॉइड कंट्रैक्शन। सो दिस इज अबाउट द क्वेश्चन नंबर 17। SAQ में लास्ट वाला क्वेश्चन है। व्हाट इज दैट क्वेश्चन? SAQ में लास्ट जो क्वेश्चन आता वो ऑर्गेनिक के नेम रिएक्शंस आते, या नहीं तो राइट अबाउट SN1 SN2 रिएक्शंस, SN1 SN2, एनी वन फ्रॉम दिस, SN1 और SN2 एनी। अगर दो भी मिला के दिया तो शॉर्ट में लिखना, अगर एक दिया तो थोड़ा डिटेल से लिखना है। SN1 SN2 रिएक्शंस। सेकेंड वन नेम रिएक्शंस में और एक रिएक्शन है सैंड मेयर, सैंड मेयर कॉमा गैटरमैन रिएक्शन, गैटरमैन रिएक्शन, गैटरमैन रिएक्शन। नहीं तो फिर एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ओके,
So these are the important question in the question number 18. SN1, SN2 reactions or some definitions are there. What is the racemic mixture वगैरह तो नहीं समझा है अभी अपन. क्वेश्चन नंबर 16 तक आए अपन. 16 तक इंटर हैलोजन कंपाउंड्स ये पढ़ाया मैं. इसके बाद में व्हाट आर विटामिन्स, हार्मोन्स, अमाइनो एसिड्स और उसके बाद में XeF2, XeF4 ये आज कंप्लीट करने वाला हूँ. हो सका तो क्वेश्चन नंबर 17 भी कंप्लीट कर लेता हूँ. और देन फिर उसके बाद में आपको क्वेश्चन नंबर 18 ऑर्गेनिक से मिलता. फिर VSAQs के जो चैप्टर्स है, पॉलीमर्स है, फिर उसके बाद में केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, वो चैप्टर्स कंप्लीट कर दे बेटा. इससे आपका ये सिलेबस खत्म हो जाता. सो दिस इज योर important SAQs. These are the important SAQs. Among all those we are completed up to the question number 15. ये सब में अपन क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट कर लिए. क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 और ये 16 पढ़ा रहा हूँ मैं. क्वेश्चन नंबर 16. 16 में इंटर हैलोजन कंपाउंड 7th ग्रुप एलिमेंट से होता, वो पढ़ा दिया मैं. फिर उसके बाद में यहाँ पे I'm explaining this बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में समझा रहे हैं. बायोमॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स व्हाट आर बायोमॉलिक्यूल्स ये थोड़ा देख लीजिए आप. देखिए बायोमॉलिक्यूल्स मीन्स विटामिन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, okay, hormones, all these are the biomolecules. These are all together are called as what? Biomolecules. Biomolecules. Now all the biomolecules joins together to form the organocell. Organocell, सेल के अंदर का सेल के अंदर का ऑर्गन बनता. और ऑर्गेनिक सेल्स मिले तो क्या बनता भाई? सेल बनता. सेल मिले तो क्या फॉर्म होता? टिश्यू फॉर्म होता. ओके, टिश्यू फॉर्म हुआ तो क्या होता? टिश्यूज मिले तो फ्रॉम द टिश्यूज वी विल गेट द ऑर्गन्स. ऑर्गन्स फ्रॉम द ऑर्गन्स यू विल गेट द लिविंग organism. Living organism. This is the relationship between the biomolecules to the living organism. ये एक VSAQ भी हो सकता है, यानी तो जनरल नॉलेज के लिए बोल रहा हूं मैं. विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, हार्मोन्स, all these are known as biomolecules. Biomolecules together to form the organocell. Organocell gives cell, cell gives tissues, tissue gives organ. From the organs we'll get the living organism. In the living organism several organs are there. So this is the relationship between the biomolecules to the living organisms. Now next, biochemical reactions. What are the biochemical reactions? Reactions which are taking place in the living beings are called as the biochemical reactions. Reactions like the photosynthesis, respiration, all these are known as the biochemical reactions. Now among them biochemical reactions, some are endergonic reactions and some are exergonic reaction. Only to learn detail about that beta. What are exergonic, what are endergonic, those are not important for your examination. Now next, in this biomolecule, first biomolecule I am taking, that is vitamins. What are vitamins? Vitamins क्या है बोल के पूछता बेटा, important question है ये. Essential food factors, essential food factors which are required in less quantities. ज़्यादा नहीं भाई, थोड़ा बस हो जाता. Essential food factors, essential food factors, essential food factors, food factors, factors which are required in less quantities, required in less quantities, less quantities, quantities for the, for what? For the growth, for the growth and
maintenance of the body, maintenance of the maintenance of the body. बॉडी के मेंटेनेंस के वास्ते और ग्रोथ के वास्ते अपन जो डाइटरी फैक्टर्स, फूड फैक्टर्स ले रहे हैं उनको बोलते हैं विटामिन्स बोलते हैं. दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. इफ द विटामिन्स आर डेफिशिएंट, अगर अपन खाने में विटामिन्स नहीं लिए तो डेफिशिएंसी आती है, उसको ए विटामिनोसिस बोल के बुलाते हैं. तो ठीक है भाई, विटामिन के क्लासिफिकेशन के बारे में समझा रहा हूँ. आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन. बेस्ड ऑन द solubility, vitamins are classified into two types. Some are soluble in the water, those are called as the water soluble vitamins. Some are soluble in the fats, those are called as the fat soluble vitamins. Vitamins which are soluble in the water are called water soluble vitamins. Vitamins which are soluble in the fats, those are called as fat soluble vitamins. Based on the solubility, किसमें घुल रहे हैं वो देख रहे हो. If they are soluble in water, those are known as water soluble. If those are soluble in the fats, those are called as the fat soluble vitamins. So exam में ज्यादा what are vitamins? Write about the deficiency of fat soluble vitamins पूछ रहा. Fat soluble vitamins which are soluble in fats, these are the vitamins. Or soluble in fats. Okay, which are those vitamins? First one is the vitamin A. It is soluble in the fat. Second one is the vitamin D. Next, third one is the vitamin E, and fourth one is the vitamin K. These are soluble in the fats, therefore these are called as fat soluble vitamins. And B complex vitamins B1, B2, B3, B6, B5 and B7, B12 all together are called as B complex vitamins. These are soluble in the water, therefore these are called as water soluble vitamins. And vitamin C, it is also soluble in the water. So these are the water soluble vitamins and these are the fat soluble vitamins. For examination point of view, fat soluble vitamins are important. Okay, fat soluble vitamins में एक करके पढ़ना है. Vitamin A, it is called as retinol बोल के बुलाते हैं. So it is present in the carrot, greenery, vegetable, milk. All these are the sources. Okay, spinach में, पालक की भाजी में विटामिन ए रहता, कैरेट में रहता, मिल्क में रहता, फिश में रहता. So these are the sources for the vitamin A. So deficiency पढ़ना है भाई, deficiency. Due to the deficiency of the vitamin A, redness of the eyes takes place. Lacrimal glands, जो आई के glands है वो सूख जाते हैं, जिसकी वजह से redness of eyes, redness of eyes. और एक जो डिसीज आ रही, नाइट टाइम आंख नहीं नजर आते. ओके, उसको नाइट ब्लाइंडनेस बोल के बुलाते. नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस. सो नाइट ब्लाइंडनेस को जीरोफ्थाल्मिया बोलते हैं. जीरोफ्थाल्मिया, xerophthalmia. This is the disease form due to the deficiency of vitamin A. Redness of the eyes or xerophthalmia. These are the diseases due to the deficiency of vitamin A. And the second one, second vitamin, vitamin D. It is known as sunshine vitamin. It is known as calciferol. Calciferol बोल के बुलाते हैं इसको. Calciferol. It is synthesized by our body ड्यूरिंग द अर्ली सनलाइट. सुबह के टाइम की रोशनी को यूटिलाइज करते हुए अपनी बॉडी विटामिन डी को सिंथेसाइज करती. सो दिस इज अबाउट द सनशाइन विटामिन, विटामिन डी, कैल्सिफेरॉल बोल के बुला रहे हैं. व्हाट इज द डेफिशिएंसी ऑफ दिस? और ये भी मिल्क में रहता, एग में रहता, ये इसके सोर्सेस है. विटामिन डी, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, following diseases are causes. Which are those diseases? विटामिन डी की वजह से rickets in the children, rickets. Bone growth is not in proper manner. बोन ग्रोथ सही नहीं होती, हड्डी थोड़ा सा पलट जाती, छोटे के छोटे रह जाते हड्डियां. दैट इज कॉल्ड एज रिकेट्स. और एडल्ट्स में ऑस्ट्रोमलेशिया, ऑस्ट्रोमलेशिया, एस्ट्रोमलेशिया इन एडल्ट्स. मतलब दिस इज ऑल्सो बोन डिसीज.
बोन की स्टिफनेस सही नहीं रहती. So this is about the deficiency of vitamin D. Now next one, vitamin A. Vitamin E. A नहीं, vitamin E. Vitamin E, it is called as tocopherol बोल के बुलाते हैं. Tocopherol. Tocopherol deficiency of this vitamin E is present in the vegetable oil. Sunflower oil है, groundnut oil है, ये पूरे जो सीड ऑयल्स है और ग्रीनरी वेजिटेबल्स में भी आपको विटामिन ई मिलेगा. और माइक्रोबियल फ्लोरा, अपने पेट में इंटेस्टाइन में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो भी विटामिन ई को सिंथेसाइज करते. This is about the sources. These are the sources of vitamin E, and deficiency of the vitamin E leads to improper muscle contraction. Improper, heart muscle रहने दो, पैर के muscle रहने दो. Improper muscle contraction. Muscle contraction. Muscle contraction is not in proper ways. Next, another disease is the sterility. Reproduction abilities decreases with the deficiency of vitamin A. Vitamin E, not vitamin A, vitamin E. Once again, I am repeating, vitamin A is called as retinol. Deficiency of that is leads to the redness of eyes and night blindness. Vitamin D, calciferol, also known as sunshine vitamin, rickets in the children, osteomalacia in the adults, both are bone diseases. Vitamin E is known as tocopherol, present in the sunflower oil, groundnut oil, and microbial flora also synthesize the vitamin E. And due to the deficiency of vitamin E, improper muscle contraction, then sterility, these are the deficiency diseases. Now then after that, vitamin K. Vitamin K is also fat soluble. These four are the fat soluble vitamins which are soluble in the fat. Okay, it is known as anti-hemorrhagic vitamin. The deficiency of it leads to the increase in the blood clotting time. ब्लड जो क्लॉट होता, कहीं भी मार लगा, जख्म लगा, वहां ब्लड क्लॉट होता, वायर मेश फॉर्म होता विटामिन के की वजह से. और विटामिन के की डेफिशिएंसी कम हो गई तो ब्लड क्लॉटिंग जल्दी नहीं होता. इंक्रीज इन वुंड हीलिंग टाइम, increase in blood clotting time. This is the these are the deficiency of the fat soluble vitamins. Okay, this is the important one. Another important question in the biomolecules is, what are hormones? What are hormones? What are hormones? Hormones are the organic compounds secreted by the ductless glands. Ductless glands reaches into the bloodstream. Hormones are the chemicals secreted by the ductless glands into the bloodstream and reaches to their targets. वो अपनी अपनी जगह चले जाते and useful for the growth of the organisms. Organisms के development के वास्ते activators के ऐसा काम करते. Once again, I am repeating this definition. What are hormones? Hormones are the chemicals which are secreted by the ductless glands. ओके, इनटू दी ब्लड स्ट्रीम, खून के अंदर डकलेस ग्लैंड से रिलीज होते. रिलीज होके क्या करते, उनके टारगेट एरियाज को पहुंचते, जाके वहां पे ऑर्गन्स के डेवलपमेंट के वास्ते काम आते. Chemicals secreted into the blood by the ductless glands reaches to their targets and useful for the growth of those organs. Those type of the activators are called as hormones. Based on the structure, hormones are classified into how many types? They are classified into three types. First one, they are classified into two types. See here, those are having this type of the structure, that is called as the steroidal structure. If the hormones are having this type of the structure, those are called as steroid hormones. If the hormones does not have this type of the structure, those are called as non-steroid hormones. Hormones are majorly classified into two types, steroid hormones and second one non-steroid hormones. In the non-steroid hormones, generally these are two types. First one is the amino acid derivatives and second type are the peptide hormones. This is about the classification of hormones. Based on the structure, hormones are classified into two types, steroid hormone, non-steroid hormones.
Then what are the steroid hormones which are having this type of the structure are called as steroid hormones. Give the examples for the steroid hormones. Steroid hormones are of two types. Generally, this one, which one? Adrenal cortex hormones. Adrenal cortex hormones are the steroid hormones. एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन्स में मिनरलोकॉर्टिकाइड और ग्लूकोकॉर्टिकाइड हार्मोन्स आते और सेक्स हार्मोन्स आर ऑल स्टीरॉयड हार्मोन्स. सेक्स हार्मोन्स में मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है which is useful for the development of the secondary sexual characters in the male. For the development of the muscle, this testosterone is useful. Next one, female sex hormone. फीमेल सेक्स हार्मोन में एस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन, प्रोजेस्टेरॉन ये आते. These are the examples for the steroid hormones. Once again I am repeating, steroid hormones, those hormones which are having this type of the steroidal structure are called as steroid hormones. These are of two types, adrenal cortex hormones, example mineralocorticoid hormone, mineralocorticoid, and second one glucocorticoid hormones. Glucocorticoid hormones. In this steroid hormone, another type is their sex hormones, which are useful for the development of the secondary sexual characters. Male sex hormone is the testosterone, useful for the development of the secondary sexual characters in males. Female sex hormone is the estrogen, progesterone. These are the examples for the female sex hormones which are useful for the development of the secondary sexual characters. So this is about the steroid hormones. Next, in non-steroid hormone, amino acid hormone. These are containing amino acid groups. Example to that is the thyroxine. Thyroxine is the hormone. Thyroxine controls the metabolic activities. अपने बॉडी के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करती. नेक्स्ट वन, पेप्टाइड हार्मोन को एक एग्जांपल इंसुलिन है. Insulin is example for the peptide hormone. What is the function of the insulin? Insulin controls the sugar level in our blood. अगर ज्यादा मीठा खा लिए ब्लड के अंदर के शुगर को लेके जाके अपने टिश्यूज में डिपॉजिट करता. ओके, ग्लाइकोजन के ऐसा डिपॉजिट करता इंसुलिन. अगर इंसुलिन कम हो गया, सीक्रेट नहीं हुआ, तो ब्लड के अंदर का शुगर ब्लड में रह जाता. सो इसकी वजह से ब्लड में शुगर रहने की वजह से डिसीज आती, दैट इज कॉल्ड एज डायबिटिक डिसीज बोलते हैं. सो दिस इज कॉल्ड एज द ग्लाइसेमिक फैक्टर. शुगर को कंट्रोल करने वाला हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन है. ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ दैट इंसुलिन डायबिटिक डिसीज आते. नेक्स्ट वन, एड्रीनलिन हार्मोन भी है. एड्रीनलिन हार्मोन इमरजेंसी फंक्शंस को परफॉर्म करता. दिस इज अबाउट दी हार्मोन्स. इतना बस हार्मोन्स में. तो हार्मोन में क्वेश्चन कैसा आ रहा, व्हाट आर हार्मोन्स? राइट द एग्जांपल फॉर द स्टीरॉइड हार्मोन्स, अमीनो एसिड हार्मोन्स, पेप्टाइड हार्मोन्स, ऐसा पूछ रहा. तो स्टीरॉइड हार्मोन्स विच आर हैविंग स्टीरॉइडल स्ट्रक्चर, एग्जांपल इसी में से कौन सा भी लिख सकते आप. मिनरलोकॉर्टिकाइड, ग्लूकोकॉर्टिकाइड, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन. और फंक्शन लिखे तो लिखिए आप. Next, amino acid में thyroxine is the example. It controls metabolic activities. Insulin is the peptide type of the hormone that controls the sugar level in our blood. This is about the important question in the second important question in the biomolecule. Next, another important question. What is that? What are amino acids? Amino acids. What are amino acids? Compounds which contains amine group as well as carboxylic group. Amine group, carboxylic group. This is amine group and carboxylic group. See here, these are called as amino acids. Amino acids. Okay, carboxylic group. That is RCOOH group. Carboxylic group and amine group दो groups रहे तो वो compounds को amino acids बोलते हैं. Next, these amino acids are useful for what? For protein synthesis. Protein synthesis में use होते हैं. Protein synthesis में कितने amino acid participate होते हैं? 20 amino acids participate होते हैं. ये 20 amino acids में 10 amino acids अपने body में synthesize होते हैं.
Among these 20 amino acids, 10 are synthesized in our body. Those are called as, which are synthesized in our body. Synthesized in our body are called as non-essential amino acids. Non-essential amino acids are those amino acids which are synthesized in our body. इनको बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, अपने बॉडी में सिंथेसिस होते हैं. तो उसको क्या बोल के बुला रहे हैं? वैसे अमीनो एसिड्स को नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स बोल के बुलाते. ग्लाइसिन, अलानाइन, these are the examples for the non essential amino acids. Next one, 10 amino acids which are not synthesized in our body, not synthesized in our body. Okay, those are called as essential amino acids. अपने बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो रहे तो उनको क्या बोलते हैं? एसेंशियल अमीनो एसिड्स बोलते हैं. अपने को बाहर से लेना है भाई, डाइट से लेना है, गोश्त अगर अपन जो खा रहे हैं उसके अंदर रहते हैं. ओके, सो which are not synthesized in our body are called as essential amino acids. Which are synthesized in our body are called non-essential amino acid. ये essential amino acid को example histidine है, tryptophan है, arginine है, arginine, histidine, tryptophan. All these are the examples for the essential amino acids. चलो भाई, व्हाट आर अमीनो एसिड्स? एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स के डेफिनेशन में बोला अब मैं. और देखिए बेटा, वन अमीनो एसिड्स और प्रोटीन कैसा फॉर्म हो रहा, थोड़ा समझा रहा हूं मैं. एक अमीनो एसिड है भाई, इसके करीब में और एक अमीनो एसिड आता. देखिए, आई एम राइटिंग लाइक दिस. ओके, देखिए यहाँ पे NH2 को ऐसा लिखा मैं, फिर और एक अमीनो एसिड को बाजू डाल ले रहा हूँ, RCOOH. This is the one amino acid molecule and this is the second one. ये दो amino acids है भाई. These two are joins together by losing the water molecule. ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH और यहाँ का हाइड्रोजन दोनों मिलते, दोनों मिलके वाटर मॉलिक्यूल चले जाता, दोनों मिलके जॉइन हो जाते. इस तरीके से एक बॉन्ड फॉर्म हो जाता, दैट इज CHR. फिर उसके बाद में क्या बच गया यहाँ पे? CO, then after that NH. I am joining this two molecule with the CONH bond, CHR, COOH. This bond, this CONH bond is called as amide bond or peptide bond. Amide bond or peptide bond. Amide bond, peptide bond से ही प्रोटीन फॉर्म होता. एक अमीनो एसिड बाजू वाले अमीनो एसिड से जन होते खुद वाटर मॉलिक्यूल जाता, CONH बॉन्ड फॉर्म होता. दैट इज द बॉन्ड इज कॉल्ड एज एमाइड बॉन्ड और पेप्टाइड बॉन्ड. इफ टू अमीनो एसिड्स आर जॉइन्ड विद द वन पेप्टाइड बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड एज मोनोपेप्टाइड. इसके बाजू को और एक अमीनो एसिड आके जॉइन हो गया, दो पेप्टाइड बॉन्ड्स है तो उसको बोलते हैं डाइपेप्टाइड बोलते हैं. तीन अमीनो एसिड्स है यानी कि और एक अमीनो एसिड आ गया तो तीन पेप्टाइड बॉन्ड्स फॉर्म हो गए तो ट्राइपेप्टाइड बोलते. ऐसा फॉर्म होते होते पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म होता. पॉलीपेप्टाइड चेन में जिसमें अमीनो एसिड की नंबर मोर देन 100 या 100 के करीब में हो गई, मॉलिक्यूलर वेट 10,000 यूनिट से बढ़ गया, तो वैसे टाइप पॉलीपेप्टाइड चेन को क्या बोल के बुलाते? प्रोटीन बोलते. The basic constituent monomer in the protein is the amino acid only. By combining this amino acid in this way, due to the formation of peptide bond, one amino acid is joined with the another amino acid, then that is joined with the another amino acid, then that is joined with the another amino acid. As a result of that, you will get the long chain, long polypeptide chain. If the number of the amino acids are equal to 100 or more than 100 and molecular weight is about 10,000, that type of the polypeptide chain is called as protein. That is about the protein. Now next, when structure of the protein is studied in three ways, structure is studied in the 4 steps: first step, second step, third step, fourth step. In the first step, we will get the sequence of amino acid. Lysine के बाद कौन सा है? Glycine है क्या? Alanine है क्या? कौन सा है ये समझाते हैं.
सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर शेप ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन कैसा है, ऐसा ये शेप में है, यानी तो स्फेरिकल शेप में है समझाता। नेक्स्ट टर्शियरी स्ट्रक्चर एक्सप्लेन अबाउट द थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट एंड बॉन्डिंग्स प्रेजेंट इन द पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन में बॉन्डिंग्स कैसे है, किसके बीच में बॉन्डिंग्स है, इसके बारे में पढ़ते हैं। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर एक्सप्लेन अबाउट द हाउ मेनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर देयर, कितने पॉलीपेप्टाइड चेन्स है, वो कैसा अरेंज होके है, इसके बारे में समझाता। दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। Structure of the protein is studied in 4 steps. First one, primary structure, that gives the information about the sequence of amino acid. Secondary structure explains the shape of the polypeptide chain. Tertiary structure explains the bondings and arrangement of the atoms in the polypeptide chain. Quaternary structure explains the how many polypeptide chains are present in that protein and how those are arranged. This is about the structure of the protein. Now then, when the protein is added to the detergent, soap या detergent मिला दिए या acids और bases से मिला दिए, नहीं तो खूब हीट कर दिए प्रोटीन्स को, तो एज ए रिजल्ट ऑफ द जो बॉन्डिंग्स है प्रोटीन में, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, वो डिस्टर्ब हो जाता। बॉन्डिंग्स इन द प्रोटीन और गेट कोलैप्स्ड के disturbing of the structure of this protein is called as denaturation of protein. By heating the protein or by the addition of the acids or bases or by adding the detergents, structure of the protein is disturbed. That is the process is called as denaturation of the protein. Curdening of the milk, that is the formation of the curd from the milk, and boiled egg is the example for the denaturation of protein. Now next about the, so these are the important question. इसके अंदर ऐसे important question मैं बोला, तो फिर उससे हटके फिर कुछ भी है तो बायोमोलिक्यूल्स में, न्यूक्लिक एसिड्स में, व्हाट आर द न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स क्या है इसके बारे में थोड़ा, और इनके फंक्शंस, व्हाट आर द यूजेस, इसके बारे में। न्यूक्लिक एसिड्स मीन्स न्यूक्लियस के अंदर रहते सो पॉलीमर्स है विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द हेरिडिटी, ओके, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के वास्ते ये यूज होते। देयर आर टू टाइप ऑफ द न्यूक्लिक एसिड्स आर देयर। फर्स्ट टाइप इज द डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते, और सेकेंड वन आरएनए। दीज टू आर द जेनेटिक इंफॉर्मर्स। जेनेटिक मतलब न्यूक्लिक एसिड्स कैसा इन लोगों को कंसिडर करते। डीएनए आरएनए क्या है, डीएनए इज द डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। मैं एक के बाजू के एक लिख रहा हूं, मैं यहाँ पे डीएनए लिखा और यहाँ पे आरएनए लिख रहा हूं मैं, आरएनए। तो इधर देखिए बेटा, डीएनए जो मेन जो डिफरेंस है, डीएनए में दो स्ट्रैंड्स रहते, एक स्ट्रैंड एक राइट साइड ट्विस्ट किया हुआ रहता। This is labeled as 5' to 3' and it is labeled as 3' to 5'. ओके, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स आते, एडिनाइन गुआनाइन से मिलता, और यहाँ पे जो है थायमिन साइटोसिन से मिलता। तो ये नाइट्रोजिनस बेसिस है, वो डिटेल से जरूरत नहीं है। तो डीएनए दो स्ट्रैंड्स रहते, स्ट्रैंड्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स रहते, तो देखे तो एक लैडर के जैसा दिखता। तो डीएनए कंसिस्टेड टू पॉलीपेप्टाइड चेन्स, टू पॉलीपेप्टाइड चेन्स की स्ट्रैंड रहती। नेक्स्ट इसके अंदर आरएनए में, आरएनए के अंदर एक स्ट्रैंड रहती, या पॉलीपेप्टाइड चेन है बेटा, ये जो है फास्फोरिक एसिड और नाइट्रोजिनस बेस न्यूक्लियोटाइड से मिला हुआ एक चेन रहता, न्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट आरएनए के अंदर सिंगल स्ट्रैंड, सिंगल मतलब सिंगल स्ट्रैंड रहता। जनरली आरएनए इज ऑफ 3 टाइप्स, एमआरएनए, एमआरएनए मैसेंजर आरएनए बोल के बुलाते, और सेकेंड वाला ट्रांसफर आरएनए, एंड थर्ड वन इज द आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए है। So all these are useful for the protein synthesis. So once again I am repeating the definition with DNA. It consists two strands. It consists only one strand. Now then in this DNA, deoxyribonucleic acid is present. Deoxyribonucleic acid present. In this oxyribonucleic sugar,
ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक शुगर इज प्रेजेंट। इसमें शुगर मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस रहता भाई। शुगर मॉलिक्यूल कौन से टाइप का है? डीऑक्सी राइबोस टाइप का है, दैट इज अ पेंटोस शुगर है, इसमें ऑक्सी राइबोस शुगर रहता। नेक्स्ट, डीएनए इज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन को पास करता है, एक दूसरे को देता। डीएनए के ऊपर आरएनए प्रिपेयर होने को क्या बोलते हैं मालूम है? ट्रांसक्रिप्शन बोलते। आरएनए के ऊपर प्रोटीन प्रिपेयर होने को क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन बोलते। तो ये दो तीन डेफिनेशन और ये टाइप्स ऑफ आरएनए याद रखिए आप लोग। और न्यूक्लिक एसिड्स आर यूज्ड फॉर द हेरिडिटी और यूज फॉर द क्राइम डिटेक्शन। कहीं भी क्राइम हो गया तो पैटर्निटी मालूम करना है तो ये न्यूक्लिक एसिड्स को इस्तेमाल करते। These are the uses of the nucleic acids. This much is enough. Now next इसमें carbohydrates बोलते, those are considered as the कार्बन के हाइड्रेट्स हैं। पानी और कार्बन मिला हुआ तो कार्बोहाइड्रेट्स बोल के बुला रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के तीन टाइप्स है। Which are those types? First one, or almost all carbohydrates are the sweet substance. तो स्वीट सब्सटेंस को लैटिन में सैकराइड बोल के बुलाते हैं। तो फर्स्ट टाइप इज द मोनोसैकराइड्स, मोनोसैकराइड्स है। सेकेंड वन डाइसैकराइड्स है, डाइसैकराइड्स। ओलिगोसैकराइड भी रहता है, इसके बाद जरूरत नहीं है, इसके बाद में अपन पॉलीसैकराइड्स लिख लेंगे। मोनोसैकराइड को एग्जाम्पल क्या है थोड़ा ये नोट कर लेना, आप याद रखना। ग्लूकोज एक है, फ्रक्टोज है, these are the examples for the monosaccharides, and both are functional group isomers। C6H12O6 है और इसका फॉर्मूला भी C6H12O6 है। इसमें कीटोनिक ग्रुप रहता है, इसमें ऑल्डिहाइडिक ग्रुप रहता। these two are functional group isomers। so monosaccharide का मतलब क्या है? when these are subjected to hydrolysis, no further sweet substance, no further sugar is formed। शुगर फर्दर शुगर फॉर्म नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल C6H12O6 है भाई, इसको मैं हाइड्रोलाइसिस करा तो व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट दी C2H5OH, अल्कोहल में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता। तो यहाँ पे फर्दर कार्बोहाइड्रेट फॉर्म नहीं हो रहा। If any carbohydrate upon hydrolysis that not form further carbohydrates, that gives you another compound, such type of the saccharides or carbohydrates are called as monosaccharides। Example glucose, fructose, these are the examples। Disaccharides है, डाई मतलब पानी में, when these are dissolved in water they gives the two molecules of monosaccharides, C12H22O11। sucrose is the example sucrose is the example for this, C12H22O11 upon hydrolysis, okay। as a result maltose, sucrose, all these are the examples। upon hydrolysis of this you will get the C6H12O6। how glucose or fructose is prepared बोले तो ये मेथड लिख सकते हैं आप। ग्लूकोज कैसा है भाई ये? when sucrose is subjected to hydrolysis, glucose and fructose is formed। this is the one method for the preparation of glucose। and the another method that is C6H5O, this is the, देखिए बेटा ये पॉलीसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड को आप हाइड्रोलाइसिस करें तो भी पॉलीसैकेराइड को हाइड्रोलाइसिस करें तो नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स C6H12O6। फॉर एग्जांपल सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज ग्लाइकोजन, अपॉन हाइड्रोलाइसिस ऑफ दैट सेल्यूलोज you will get the number of molecules of glucose। तो मैं यहाँ क्या बताना चाह रहा हूँ, पॉलीसैकेराइड्स किसको बोलते? अपॉन हाइड्रोलाइसिस ऑफ द कंपाउंड, if more than 3 or 4 molecules of the monosaccharides are formed, such type of the saccharides or carbohydrates are called as polysaccharides। अगर पानी में डाल दिए तो 2 या 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ, 2-3 नहीं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स फॉर्म हो रहे हैं तो उनको क्या बोल के बुलाते हैं? डाइसैकेराइड्स बोलते। बेस्ड ऑन द हाइड्रोलाइसिस दिस carbohydrates are classified into 3 types: monosaccharides, disaccharides and polysaccharides। okay, this is about the carbohydrates। जो important questions थे ये carbohydrates में कंप्लीट हो गए बेटा। ये स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज वगैरह ये वो नहीं पूछता, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पूछ सकता, नहीं तो न्यूक्लिक एसिड्स के फंक्शंस पूछ सकता,
और ज्यादा क्या पूछ रहा, व्हाट आर हार्मोन्स एंड व्हाट आर विटामिन्स एंड व्हाट आर द अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स में थोड़े क्वेश्चन समझाया मैं। सो दैट इज अबाउट द कार्बोहाइड्रेट्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक हो गया। फिर उसके बाद में ये 16 क्वेश्चन में और एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच गया वो XZF2, XZF4 और XZF6 इन लोगों के स्ट्रक्चर्स के बारे में और प्रिपरेशन के बारे में समझा रहा हूं मैं। ओके, दिस इज इन द 18th ग्रुप नोबल गैसेस में 0 ग्रुप एलिमेंट्स में है। और ये क्वेश्चन कैसा भी आपको क्वेश्चन नंबर 16 और 17 में रहता ही रहता। स्ट्रक्चर ऑफ द XZF2, XZF4, XZF6 में तो XZOF4, इसी में से कौन से भी दो मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर पूछ रहा है बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी द प्रिपरेशन। Xz प्लस क्या करना है भाई, F2 मिलाना है। XZF2 1:1 रेशियो। देन 673 केल्विन्स के पास 1 बार प्रेशर के पास a reaction होता। as a result of that you will get the XZF2। here I am writing XZF2, इसके बाजू क्या लिख रहा हूं मैं, XZF4 और इसके बाजू XZF6 लिख रहा हूं मैं, XZF6। ये तीनों के स्ट्रक्चर्स थोड़ा देख लीजिए आप। प्रिपरेशन स्ट्रक्चर सेम है। Xz प्लस 2F2 ले लेना भाई और 200 बढ़ा दो, 873 केल्विन से ले लो भैया। 7 बार्स प्रेशर ले लो, एटमॉस्फेयर भी बोल सकते हैं उसको। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट यू विल गेट द XZF4। दिस इज अबाउट द प्रिपरेशन मेथड। वी आर टेकिंग इन 1:5 रेशियो। ये रेशियो में इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ तो ये आ रहा। नेक्स्ट Xz को 3F2 मिला लिए आप, फ्लोरीन को इंक्रीज कर रहा हूँ, 1:10 रेशियो में ले लिया। 573 केल्विन्स एंड अबाउट द 60 to 70 बार्स प्रेशर इंक्रीज करना है। देन उसके बाद में क्या फॉर्म होता है, XZF6 फॉर्म होता। दिस इज अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ दिस xenon compounds. Xenon forms the compounds with the higher electronegative elements like the fluorine and oxygen. Now forms the compound. If fluorine is there, those are called as the xenon fluorides. Xenon forms 3 type of fluorides. First one xenon difluoride XZF2. Second one is the xenon tetrafluoride XZF4. Third one is the xenon hexafluoride XZF6. See, this is the preparation method for this various xenon compounds. xenon के fluorides के preparation methods मैं यहाँ पे लिखा। Now then a structure of XZF2. XZF2 का structure, Xz belongs to which group? 8th ग्रुप है। 8 लाइन डाल लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइन्स डाल लीजिए आप। फिर उसके बाद में कितने फ्लोरिन्स मिलाना है आपको, 2 फ्लोरिन्स मिलाना है। ये 2 फ्लोरिन्स मिला लीजिए। फिर बाकी आके क्या करना, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर। चलिए अब स्ट्रक्चर बनाना है भाई। क्या स्ट्रक्चर बनाना है, कैसा बनाना है, देखिए अब कैसा लिखना। अकॉर्डिंग टू द BSc PR theory, on the central element how many electron pairs are there, 1 2 3 4 5 electron pairs are there। and xenon undergoes which hybridization, थोड़ा याद रख लीजिए, sp3d hybridization and 5 electron pairs are present। now then फिर उसके बाद में ये 5 electron pairs में कौन से क्या है आपको मालूम है क्या। सो ये 2 है, ये बॉन्ड पेयर्स है XZ, F और F, और जो एक्सियल पोजीशन में आपको लोन पेयर्स ऐसा मिलेंगे। दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द XZF2। शेप ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज द लीनियर शेप। ये खत्म हो गया, वेरी सिंपल। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, Xz लिख लो, 8 लाइंस डाल लो, इसमें 2 फ्लोरीन एटम्स को मिला लो। सो 1 बॉन्ड पेयर हो गया, 2 बॉन्ड पेयर हो गए। ये दोनों को मिला के 1 पेयर होता है, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर और 3 लोन पेयर्स है। ओके, in the XZF2 there are 5 electron pairs are present, among them 2 lone pairs and among them 2 bond pairs and 3 lone pairs are present. Xenon undergoes sp3d hybridization। then shape of the molecule is this shape, linear shape with 3 lone pairs। now next XZF4 का structure। XZF4 once again Xz डाल लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइन्स डाल लीजिए आप लोग, साइड में डाल लेना, एग्जाम में नहीं लिखना है पूरे।
तो ये लिखना है आपको, 4 फ्लोरीन एटम्स डाल लीजिए आप, 1 2 3 4 4 ये देखिए, एक बॉन्ड पेयर, दो बॉन्ड पेयर, 3 4 4 बॉन्ड पेयर्स है, इन दोनों को मिला के एक लोन पेयर बनता। तो ऑन द सेंट्रल एलिमेंट इन द XeF4 ऑन द xenon, XeF4 में xenon सेंट्रल एलिमेंट है, एक xenon के ऊपर पूरे कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स है भाई, 1 2 3 4 एंड 5, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है। कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, 8 है ना पूरे। फिर से यहाँ पे ड्रॉ कर ले रहा हूँ, Xe 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें एक फ्लोरीन मिल गया, दिस इज द सेकेंड वन, दिस इज द थर्ड वन, दिस इज द फोर्थ वन, एक और एक एक एक, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स है भाई, एक बॉन्ड पेयर, दो बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, 4 बॉन्ड पेयर्स और 2 लोन पेयर्स आर प्रेजेंट, 4 bond pairs. On the central element xenon, 6 electron pairs are there. Among them, these 4 or bond pairs are present and 2 lone pairs are present. According to VSEPR theory, shape of this molecule is square planar shape with 2 lone pairs. This is about the structure of XeF2. Next about the XeF6. XeF6 का स्ट्रक्चर, यहाँ पे हाइब्रिडेशन भी नोट करना, आप एक इंक्रीज करना sp3d2, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स बोल रहा हूँ, तो हाइब्रिडेशन sp3d2 आता, यहाँ पे हाइब्रिडेशन sp3d3 आता, तो फिर Xe डाल लिया भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज बिलोंग्स टू 8th ग्रुप, इसीलिए 0 ग्रुप का Xe का 8 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा 8 लाइन्स खींच लिया। कितने फ्लोरीन्स मिलाना, 1 2 3 4 5 और ये 6 वाला, एक लोन पेयर बच गया। तो 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर है। तो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल क्या बनने वाला है, 4 बॉन्ड पेयर्स को ऐसा जमा लेना, यू हैव टू अरेंज दी 4 बॉन्ड पेयर्स लाइक दिस। फर्स्ट दिस इज द 5th वन, ऐसा क्लोज कर लो, एंड दिस इज द 6th वन, ऐसा कर लो, और 7th वाला जो है लोन पेयर है, आप कहीं भी उतार सकते। तो ये डिस्टोर्टेड पेंटागोनल बाइपिरामिडल, या नहीं तो इसको हटा दिए तो आप ऑक्टाहेड्रल शेप बोल के भी लिख ले सकते। दिस इज अबाउट द शेप ऑफ XeF6 मॉलिक्यूल। तो इसी में से आपको एक ऐसे क्यों आने वाला है इंशाल्लाह, कैसा भी XeF2 ने तो XeF4 XeF6 का प्रिपरेशन और इसका स्ट्रक्चर के बारे में पूछता हूँ। हाउ इट रिएक्ट्स विद द वाटर मॉलिक्यूल बोल के भी पूछ सकते हैं आप। इसका रिएक्शन देख लीजिए बेटा, 2XeF2 प्लस 2H2O ले लीजिए आप, Xe को हटा दीजिए, 2Xe लिख लीजिए आप, फिर उसके बाद में 4HF कर लीजिए आप, 4HF एंड रिमेनिंग और द ऑक्सीजन एटम्स, ऑक्सीजन को बाजू के लिख लेना, प्लस O2। So this is about the reaction of the XeF2 with water. Yeah, okay, remaining thing I will continue tomorrow.